Hello and welcome. Welcome to the weekly analysis of Nifty and key stocks of Nifty. Friends, आज है 19th December and we'll be estimating the probable moves, resistance and support levels along with the buying and selling zones in Nifty and key stocks of Nifty for the next trading day, which will be on 21st December. And we'll also look ahead for the entire week, how the market could be or how these stocks, almost 10 or 9 or 10 stocks of Nifty can perform. We'll also see what kind of performance has been shown by these key stocks of Nifty, which we keep on analyzing week after week, and we provide the targets or correction targets or the upside targets, right? Well, if you are new to our YouTube channel, friends, do consider subscribing to this channel and don't forget to press the bell icon such that whenever we upload any new video, you get notification. And of course, be generous to share the knowledge with your friends and trading communities. There are many videos we have created here, friends, for trading and investing community, which we would love to spread to our community people who can take advantage of quality knowledge. Now, if we look at the daily chart of Nifty and Bank Nifty on Friday, friends, the week gone by, the week had been, for Nifty, it had been bullish. For the Bank of sticks here, right? Now, in this particular video, friends, we'll not be talking about Bank Nifty or banking stocks, but we'll be only focusing in Nifty and key stocks of Nifty. And for banking stocks and Bank Nifty analysis, I'll be making another video which will be posted to you today or tomorrow. So having a look at Nifty closely, you can see that even market opened up, gap up on Friday, but immediately for next 45 minutes we saw complete profit booking, right? And obviously that DIIs had been booking profits day after day. So far they have sold equities in the cash market, I think somewhere around 29-30,000 crore rupees, right? So that's the kind of profit booking happening in the morning. But what happens when the market goes to the lower level, like when the market touched around 13,659 or so, we witness the buying interest by FIIs at lower levels. Of course, the market recovered and closed at a lifetime high, right? And the same thing I had been explaining in last few of my videos, that at lower level you would see the market is seeing the buying interest, and at higher level profit booking interest, and slowly but steadily market has been rising up, right? एंड अगर हम फ्राइडे की बात करें फ्रेंड्स, तो फ्राइडे ओवरऑल डॉक्टर रेड्डी, बजाज ऑटो, इन्फी, विप्रो, सिप्ला वर द नेट कंट्रीब्यूटर्स among Nifty 50 stocks, while as the top losers were IndusInd Bank, HDFC Bank, ONGC, Maruti, and Indian Oil Corporation. Although the Nifty closed a lifetime high, the market breadth remained neutral to mildly positive, with 27 stocks advancing and only 23 stocks declining. Nifty closed at record high of 13,761 with a net gain of 20 points. And you can see that the net gain of Nifty in last few trading session has been very marginal, right? एंड हमने फ्राइडे के लिए एस्टिमेट किया था फ्रेंड्स द 13,600 से 13,900 का ट्रेडिंग रेंज, एंड यू कैन सी दैट निफ्टी हैड बीन होवरिंग इन दैट रेंज. सो जनरली हम जो ये रेंज निकालते हैं वो दैट्स बेस्ड अपॉन द प्राइस एक्शन एज वेल एज द डेटा एनालिसिस, व्हिच यू कैन ऑल्सो ऑफ कोर्स लर्न एंड डू योर ओन एनालिसिस फॉर दैट. नाउ अगर हम ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से देखें फ्रेंड्स, तो निफ्टी ने लोअर हाई बनाया है एंड लोअर लो भी बनाया है. दैट मीन्स निफ्टी की जो ये कैंडल है, दैट हैड व्हाट यू कैन से, it's of course a dragonfly doji kind of candle, but it did not cross the previous high. It's a high also didn't cross. Of course it closed above than previous closing with the gain, but इसने higher high नहीं बनाया है, right? So that's one point to be noticed. And overall अगर हम देखेंगे friends, तो it seems
it could be a trend reversal, but of course we need to see on Monday the follow through. अगर नहीं होएगा तो रिवर्सल नहीं होएगा, राइट? एंड ऑफ कोर्स जब तक FIIs का पैसा आ रहा है मार्केट में तब तक रिवर्सल होना पॉसिबल भी नहीं है। नाउ अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से देखें फ्रेंड्स, तो निफ्टी को डाउन साइड में सपोर्ट है 13,741 पे, 13,713 पे, 13,659 एंड 13,630 पे, राइट? तो अगर अपर साइड में रेजिस्टेंस देखता हूं तो देन 13,773 हमारा पहला रेजिस्टेंस है, जो कि हमारा फ्राइडे का हाई है। नेक्स्ट लेवल है 13,800, 13,850 नेक्स्ट लेवल है, 13,900 हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल है। सो वी कैन से रफली अगर मार्केट थोड़ा बुलिश भी रहेगी तो अपर साइड हमारी लिमिटेड है, समवेयर अराउंड 13,900 पे, वाइलेज हमारी जो लोअर साइड है वो लिमिटेड है समवेयर अराउंड 13,630 के आसपास में। सो ये हमको एक ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से दिखाई दे रही। ऑफ कोर्स वी विल बी लुकिंग एट डेटा पर्सपेक्टिव बिफोर वी स्टार्ट लुकिंग एट द trading plan at the end of this video. So watch out the video until the end so that you can understand how you can play out in intraday trades, right? But before that friends, let's have a look at key stocks of Nifty. So जो Nifty के key stocks है उसमें पहला जो heavy weight stock है friends, that is Reliance, and हमारी Reliance की running commentary काफी क्लियर रही है, एंड हमारे जितने भी टारगेट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे रिलायंस में वो सारे टारगेट मीट हुए हैं, राइट? तो हमारा एक टारगेट था लोअर साइड में 1805 और 1806 का। ऑफ कोर्स रिलायंस वहां तक तो नहीं आई थी, बट 1834-35 तक रिलायंस आई थी। एंड after that we said, for coming few weeks it will be in consolidation mode as long as Reliance is below 50 days exponential moving average, which is somewhere around 2018, and below 100 days moving average, 100 days moving average almost 2000 के 1997 पे है फ्रेंड्स, राइट? तो जब तक रिलायंस इसके ऊपर डिसाइसिवली क्लोज नहीं होता है, इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो 2020 के ऊपर, मतलब 2020 के ऊपर अगर रिलायंस डिसाइसिवली क्लोज होता है और ये जोन ब्रेक करता है, ये जोन एक अच्छा खासा इसमें अभी डिस्ट्रीब्यूशन जोन सा बन गया जो कि 209 के आसपास में, राइट? ये लेवल ब्रेक किया रिलायंस ने, देन यू वुड सी रिलायंस वुड बी अगेन अप्रोचिंग आवर टारगेट्स व्हिच आर ऑन द अपर साइड 2390, 2470, and until Reliance crosses this 50 and 100 days exponential moving average, you would see there will be a correction going on or a consolidation going on. But अभी Reliance में जो नई न्यूज है, that is along with the British Gas, they have found out they have started a production of gas in Andhra Pradesh. That's a good news, and that might fuel up Reliance a little on Monday. So watch out करें, अगर Monday market 2090 के ऊपर क्लोज होती Reliance के लिए, तो then you would see Reliance will continue its bullish move immediately after that. Of course, the market has to continue upside moves, right? And Reliance is one of the constituents which takes the market up, right? कई बार मार्केट के पास में कुछ कारण नहीं होता है तो रिलायंस भी ऊपर लेके जाता है उसको। अभी बात करते हैं हम भारती एयरटेल की फ्रेंड्स, एंड भारती एयरटेल की बाइंग हमने दी थी समवेयर अराउंड 400 के आसपास में, एंड जो हमारा मेन रेजिस्टेंस है यहाँ पे है 429 पे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट छोटे मोटे यहाँ पे रेजिस्टेंसेस जो थे वो ऑलमोस्ट भारतीय एयरटेल ने कंप्लीट कर लिए हैं। बट एक और बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे जो कि ये ऑलमोस्ट मे 20 की जो ट्रेंड लाइन है, जो असेंडिंग चैनल में भारतीय एयरटेल चल रहा था वो है, और आपने देखा होगा लास्ट 2-3 सेशन में दैट्स अ बिग रेजिस्टेंस, दिस ट्रेंड लाइन, राइट? अगर एक बार ये ट्रेंड लाइन टूट के भारतीय एयरटेल 530 के ऊपर क्लोज होता है तो देन यू वुड सी 560 वुड बी द फर्स्ट टारगेट एंड 611 विल बी द नेक्स्ट टारगेट फॉर भारतीय एयरटेल। तो अपसाइड भारतीय एयरटेल में काफी है, एंड इन केस ऑफ लॉकडाउन इवन बढ़ता भी है तो यू नो दैट टेलीकॉम कंपनीज को फायदा ही होने वाला है। पीपल आर यूजिंग लॉट ऑफ डेटा एंड वॉइस, पीपल आर ऑपरेटिंग फ्रॉम होम, so that also increases the revenue per user for Bharti Airtel. So as of now Bharti Airtel seems to be bullish, right? And एशियन पेंट की बात करते तो एशियन पेंट हमारी
commentary हमेशा bullish रही है Asian Paint में because of it has got the inherent characteristic of it has a business moat which always pushes it upside. But अभी ये एक जो ascending channel में Asian Paint चल रहा था friends, it has come on the resistance line of ascending channel and you could see that Friday there was a selling pressure here, right? तो अगर Asian Paint अभी यहाँ से correction करता है तो 2515 2440 should be our levels और ये levels should be the buying opportunity. As long as market goes up, you would see Asian Paint is continuing its upward journey. इसके जो अगर आपको याद हो 2 हफ्ते पहले भी हमने बात की थी कि अगर ये 2250 के ऊपर जाता है तो then our targets were 2465 and 2600, right? तो 2600 तक का तो टारगेट इसने अचीव कर लिया. अभी नेक्स्ट टारगेट जो है इसका अभी भी 2680 2720 के ये जो है टारगेट फ्रेंड्स इसमें अभी भी बचे हुए हैं, which you can see, and there is another target of 2875 on the upside, right? क्योंकि इतना हाई लेवल पे है कि हमको चार्ट थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है यहाँ पे. एंड एशियन पेंट में वी आर स्टिल बुलिश. थोड़ा स्ट्रेंथ कमजोर हो रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. रीजन बीइंग वेरी सिंपल हियर बिकॉज देयर इज अ trend line, there is a resistance trend line of ascending channel. Once it is breaking it out or after correction it moves, then you would see that it has already gone upside and there is a more headroom to to go to take the prices on upper side like this, right? तो ये एक फिनोमेना है जो चलते रहता है स्टॉक मार्केट में. You should take care of that aspect. Now टाइटन को देख लेते हैं फ्रेंड्स. टाइटन इज ऑल्सो अ बुलिश स्टॉक एंड टाइटन में हमने जो टारगेट दिए थे जब भी टाइटन करीब करीब 1390 के आसपास में ट्रेड कर रहा था, तो जो हमारे टारगेट थे वो टाइम पे 1440 1475 और 1520 के थे. तो ये टारगेट तो फ्रेंड्स अचीव हो गए. नाउ व्हाट मे हैपन इज इट मे करेक्ट अ लिटिल टुवर्ड्स 1440 क्योंकि ये भी एक रेजिस्टिव ट्रेंड लाइन पे पड़ा हुआ है और यहाँ से थोड़ा करेक्शन होना नेचुरल है इसके लिए. बट इसके जो अपसाइड टारगेट्स हैं फ्रेंड्स दे आर वेरी वेरी एम्बिशियस, राइट? 1660 का इसका टारगेट है, 1660 रुपए का इसका पहला टारगेट है, which you might see in coming time to be achieved as long as market is gaining. So you can see that Titan is one of the big contributors to Nifty 50. तो इसमें बुलिशनेस बनी रहेगी. हाउएवर अगर आप करेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो मे बी 1445 could be a good correction point where you can get opportunity for taking a new trade in. But as of now it's expensive and it's already run up quite high. तो ये एक चीज है फ्रेंड्स. ये देख लिया. हाँ, आईटीसी शायद हमारा छूट गया था. आईटीसी को देख लेते हैं. आईटीसी में वी बीन बुलिश फ्रॉम 165 170 के लेवल से एंड इट हैज मेड अ राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न एंड इट्स target again is ambitious, but at the same time you will see at this conjunction of 235 जो अगर 220 टूटता है लेवल यहाँ पे जो कि हमारा पहला टारगेट था आफ्टर 200, तो ये तो टारगेट अचीव होने को या मोर और लेस अचीव हो गया है. बट यहाँ पे एक कन्फ्लुएंस है ऑलमोस्ट 230 225 के आस 230 से 235 के बीच में. तो ये एक लेवल तोड़ना इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है. इट विल नीड अ स्ट्रेंथ एंड मार्केट का बुलिशनेस भी इसको जरूरत पड़ेगा, उसके सपोर्ट का भी जरूरत पड़ेगा. बट वन इट्स ब्रोकन, वंस इट इज आउट ऑफ 235 230 के जोन से, यू वुड सी 265 वुड बी द नेक्स्ट टारगेट फॉर आईटीसी. एंड business module अच्छा है. Only thing is it suffers from a tag of sin goods, right? And many of funds are now talking about they don't want to invest in sin goods company. So that's one of the reason इसकी काफी पिटाई हो चुकी है. And I think यहाँ से ये अच्छी 265 300 के लेवल पे हमको आता हुआ दिखना चाहिए coming time में. So I'm bullish about ITC at this point of time. नाउ नेक्स्ट स्टॉक फ्रेंड्स हम देखते हैं यहाँ पे टाटा मोटर्स. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का स्टॉक है. ऑल्दो फंडामेंटल्स कमजोर हैं, बट एज Tata Group has said, Mr. Chandrasekhar has said that he would like to make Tata Motors debt free in coming times. So as we know that Tata Group is it honors its words, right? And that's what is making this stock bullish. Apart from that, they are also working on electric vehicles. Some of the models they have already launched. And
मतलब इसमें भी एक बुलिश स्कोप है। हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 200 का है, 20 पॉइंट, दैट मींस समवेयर अराउंड 22% के आसपास में हमको अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। हाउएवर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज स्ट्रगलिंग इन द दिस ट्रेंड लाइन, राइट। तो अगेन ये ट्रेंड लाइन से बाहर निकलने के लिए इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, फिर ट्रेंड लाइन ऊपर जाएगी तो पॉसिबली दिस कैन गो स्लोली अप। तो एकदम फास्ट मूव एक्सपेक्ट ना करें टाटा मोटर्स में। It could be a little slow motion to reach 200 ka target. So if you are bullish in this, or if you have already taken the position, you can continue with a stop loss. And अगर correction होता है तो in that case you will see around 170 175 के आसपास में, that could be another buying opportunity. Now next stock of auto sector is Maruti Suzuki, which we saw on Friday had seen a डाउनफॉल, राइट। सो जो हमने एक बेस लेवल दिया था कि भाई 7550 का, तो ये बेस लेवल इसने यहाँ पे टच किया। यहाँ से इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलना चाहिए। ये काफी पुराना सपोर्ट लेवल है फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हो। तो अगर ये यहाँ से अप मूव लेता है तो अपसाइड के इसके टारगेट्स काफी अच्छे हैं, 7950, 8000, 8500 के। यू माइट सी अ टेम्पोररी bearishness in this or maybe a correction up to 7325। 7325 के नीचे मुझे नहीं लगता ये आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है, सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, और 50 डेज का मूविंग एवरेज भी ऑलमोस्ट धीरे धीरे इसका ऊपर आते जा रहा है। सो अगर 7325 या 7350 में आपको ये स्टॉक मिलता है तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड बाई, राइट। एंड लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, आप इसमें बुलिश रह सकते हैं और बड़े अच्छे से ये चैनल फॉलो करता है। सो कीप दैट इन माइंड। And TCS is one of the strongest contender in IT industry, and जैसे मार्केट में थोड़ा भी डाउनफॉल होता है या मार्केट स्टेगनेंट होती है तो यू कैन सी दैट टाटा कंसल्टेंसी और IT स्टॉक्स स्टार्ट पिकिंग अप। एंड दूसरा रीजन, हमने काफी टाइम से इसके फॉलो अप में ये भी कहा था कि भाई टाटा कंसल्टेंसी ने बाईबैक का ऑफर दिया है 3000 के प्राइस पे, तो ऑब्वियसली 3000 के आसपास में जाना तो इसका बड़ा नेचुरल सा फिनोमेना है। तो यहाँ पे जो करेक्शन हुआ था, यहाँ ये चैनल के यहाँ पे माय एक्सपेक्टेशन वाज 2550 तक आना चाहिए था, इसको ये गैप फिल करना चाहिए था बिकॉज इट वाज अ बुलिश गैप, बट इट जस्ट रैन ऑफ, गैप वर्कड एज अ सपोर्ट जोन एंड इट रैन ऑफ फ्रॉम देयर, राइट। तो अभी भी अगर आपको ये डाउन साइड में 2740 2750 के आसपास में दिखाई देता है तो दैट कुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बिकॉज दैट विल बी अ चैनल ट्रेड, राइट। तो ये भी आप इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स ऑन अपसाइड आर गुड, 3060 हमारा नेक्स्ट टारगेट है। सो एज ऑफ नाउ तो 2861 पे है ये, और बाईबैक के ऑफर से बाईबैक का ऑफर इसमें भी ऑलरेडी चल रहा है टाटा की तरफ से, राइट। नेक्स्ट स्टॉक आईटी का इन्फी फ्रेंड्स। तो इन्फी को देख लेते हैं। इन्फी अगेन टीसीएस के जैसे एक जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और गैप अप स्टार्ट हुई थी फ्राइडे को। यू कैन सी दैट मोर और लेस ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन से बाहर निकली हुई है। तो खाली मंडे को देखें, अगर मंडे इट रिमेन्स अबव देन दिस ट्रेंड लाइन, देन यू कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन इन दिस, नॉट द ट्रेंड लाइन, जोन, डिस्ट्रीब्यूशन जोन, राइट। तो इसका टारगेट है 1220 1265 का हमारा नेक्स्ट टारगेट है फ्रेंड्स इसमें। एंड यू कैन सी समवेयर अराउंड 75 पॉइंट्स अपसाइड हमको इन्फोसिस में दिखाई देता है, ऑल्दो इट्स अ रन अप एंड इट्स एक्सपेंसिव स्टॉक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट देयर कुड बी फर्दर स्कोप। एंड स्पेशली अगर मार्केट में करेक्शन आती है इन चाहे वो ग्लोबल मार्केट में करेक्शन आए, यू वुड सी आईटी एंड फार्मा स्टॉक्स रनिंग अप इमीडिएटली, बिकॉज क्योंकि डॉलर रुपी सस्ता हो जाता है इन सच अ केस, एंड डॉलर जैसे स्ट्रांग होएगा, इनकी अर्निंग डॉलर में होती तो दे स्टार्ट रनिंग अप, राइट। तो आईटी फार्मा के ऊपर ये नजर आप बना के रखें। एज ऑफ नाउ Infosys as well as TCS both are looking strong contender for up move, right? So these were some of the stocks which we are monitoring week after week, and we can see that these stocks had been performing the way we have estimated these stocks. And I'm sure if you have taken positions at right time, you might be making 30-40% of the profit in it. And if you are in profit, friends, keep on booking the profit. Now when I'm talking about targets or where one can buy it, I'm not suggesting anything. Stock market is a risky business, friends. You must learn it, or you must have a mentor or coach who can guide you in which stocks you should take entry and when you should exit or book the part profit, right?
सो मैं ये जो भी शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स. डू कंसल्ट योर financial advisor for further information before taking any position. Now let's look at international markets and we'll look at DAX Germany and FTSE London. Right? इससे हमको एक क्यू मिलता है कि भाई ग्लोबली मार्केट कैसे चल रहे हैं. एंड FTSE एज वेल एज डेक्स के लिए हमारी रनिंग कमेंट्री बुलिश रही है क्योंकि इसने एक अच्छा फ्लैग पैटर्न बनाया था और ये फ्लैग पैटर्न से ये ब्रेकआउट कर चुका है. नाउ कंसोलिडेशन के बाद में इट इज रेडी टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, राइट. बट इन बिटवीन ऑफ कोर्स देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन जोन, एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन जोन है. यू कैन सी दैट कमिंग वीक में पॉसिबली ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन टूट जाएगा. उसके बाद में यू वुड सी European markets would be, scaling new heights, right? And that will definitely give a boost to our market as well. And that you can also see from Nifty. Now, Nasdaq को देखते हैं friends. Nasdaq has already gone above its lifetime high. In fact, lifetime high इसने सितंबर के मंथ में बनाया था और वहां से फिर थोड़ा almost सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, more or less even December we can say consolidation के मोड में था. अभी as of now अच्छा bullish momentum लिया हुआ है इसने, right? तो ये एक अच्छी बात है. ये Nasdaq स्पेशली टेक्निकल और टेक कंपनीज का इंडेक्स है which shows the world is investing in the companies which are innovating in technology area, right? Now S&P 500 और Dow Jones की बात करते हैं friends, तो you can see that Dow Jones has already gone above pre-COVID levels and it's in lifetime high. And अच्छा खासा इसने भी यहाँ पे एक कैंडलस्टिक का जो पैटर्न बना है वो अगर आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न है जो कि असेंडिंग ट्रायंगल है, राइट. और ये फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है. सिमिलरली अगर आप S&P 500 की बात करेंगे, यहाँ पे भी आपको लाइफ टाइम हाई के ऊपर है ये S&P 500 एंड एक बुलिश पैटर्न बना रहा है. सो कुल मिला के अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें फ्रेंड्स, तो ग्लोबल मार्केट्स आर शोइंग वेरी positive sign and bullish momentum. Now looking at the data, let's see how Nifty is giving bulls and bears emotions, so that we can look at what could be emotion on Monday based upon price action and data, right? तो हम किस ऑप्शन चेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स. सिंस मार्केट closed at 13,760, so 13,750 will be our at the money strike. and हम 24 दिसंबर एक्सपायरी के ऑप्शन चेन की बात कर रहे हैं निफ्टी में, right? So 13,750 के आसपास में we'll be seeing how bulls and bears have been active in taking the position for the upcoming week, right? Now 13,750 के ऊपर क्लोज हुआ है, सो 13,750 could be our support one. यहाँ पे almost 500,000 contracts हैं, 5.19 lakhs, and उसके ऊपर भी 13,800 पे you can see काफी अच्छी पुट राइटिंग हुई है, and that's quite encouraging, right? 13,700 पे देखेंगे फ्रेंड्स तो 2.3 million contracts हैं, that will act as a support too, and यहाँ पे massive पुट राइटिंग हुई है 8.5 lakhs की. Below than that 13,650 पे 500,000 contracts हैं, so that will act as a support 3. अगर ये लेवल टूटता है तो 13,600 could be our सपोर्ट लेवल 4th डाउन साइड. अगर आपको याद हो तो जब हमने प्राइस एक्शन की बात की थी, हमने वहां पे देखा था कि कुछ 13,630 के आसपास का लेवल हमको दिखाई दे रहा था. वी कैन क्लोजली सी दैट 13,650 के आसपास में वो यहाँ से हमको डेटा में दिख सकता है लोअर साइड में, राइट. नाउ अगर हम कॉल साइड में देखें फ्रेंड्स, तो बेयर्स हैड आल्सो बीन वेरी एक्टिव. 13,700 पे 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग की है उन्होंने, एंड यू कैन सी ओवरऑल 1.7 million contracts. Above than that 13,750 पे they have been active with the 3.9 lakh contracts and overall 8.8 lakh contracts. And so this is again, the bears have got sentiments that market would go below this level or these levels in the coming week, right? And but जो हमारा रेजिस्टेंस मंडे के लिए निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, वो है 13,800 का, जहां पे ऑलमोस्ट 5.9 लाख फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं और ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट है 2.2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स का, राइट. तो ये हमारा R1 का काम करेगा. उसके ऊपर अगर हम देखें तो 13,850 विल एक्ट एज R2, एंड अगर ये टूटता है तो 13,900 विल एक्ट एज R3. तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और अच्छी खासी 1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग हुई है, राइट, ऑन फ्राइडे इटसेल्फ.
ये लेवल अगर टूटता है तो फ्रेंड्स देन 14,000 का लेवल है जहां पे कि मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पे भी फ्रेश 9.28 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए। सो हमारा मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे 14,000 पे, और जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो हमारा पुट साइड में है 13,700 पे, राइट। सो मैक्स ओआई हमारे पास में यहाँ पे, अगर हम मैक्स ओआई के हिसाब से बात करें तो 13,700 से 14,000 की रेंज बनती है, और प्राइस एक्शन के हिसाब से बात करें तो 13,650 से 14,000 की रेंज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइट, और 13,900 की बात कर रहे हैं प्राइस एक्शन से, राइट। सो दैट्स व्हाट डेटा इज, वी कैन से रफली निफ्टी का जो डेटा है वो प्राइस एक्शन से सिंक कर रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। लेट मी स्टार्ट द chart of Nifty and Bank Nifty once again so that we can go and now talk holistically about the market. So एज बैंक निफ्टी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, तो हम यहाँ पे सिर्फ निफ्टी की बात करेंगे फ्रेंड्स। अब निफ्टी में आप देख सकते हैं कि 13,630 से 13,900 की हमको रेंज दिखाई दी, और वहां से हमको मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ साइन मिल रहे हैं, राइट। तो ना 15 मिनट के चार्ट में हम निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं। इंट्राडे में आप निफ्टी में कैसे पोजीशन ले सकते हैं, और इससे पहले कि हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, आपको एक बात ध्यान में रहनी चाहिए कि जैसे ही प्राइस हायर ओपन अप हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो रही है, और जैसे ही प्राइस लोअर लेवल पे जा रही है, प्राइस में बाइंग आ रही है, राइट। तो पीपल आर इंटरेस्टेड इन बाइंग, चाहे वो रिटेल ट्रेडर्स हों या चाहे FIIs हुए, right? They all are looking for the opportunity. Since chart छोटे time frame में नहीं खुल रहा friends, so we will talk from the daily chart perspective. So the strategy for Monday could be simple कि अगर let's say upper level पे market open होती है, let's say 850 पे, तो then you would see थोड़ा सेलिंग इंटरेस्ट चालू हो जाएगा वहां पे, या प्रॉफिट बुकिंग का इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। सो यू कैन शॉर्ट एट दीज लेवल्स, हायर लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं, बट विद इन हाफ एन आवर टू 45 मिनट उन ट्रेड से आपको बाहर निकल जाना है, क्योंकि जैसे ही लोअर लेवल पे आप जाएंगे यहाँ पे आपको बाइंग का इंटरेस्ट दिखाई देगा, राइट। तो अपर साइड में सेलिंग का इंटरेस्ट है, लोअर साइड में बाइंग का इंटरेस्ट है। और अगर आप मार्केट गैप डाउन स्टार्ट होती है फ्रेंड्स, अगर 13,660 के आसपास में और मार्केट गैप डाउन स्टार्ट होती है, तो देन यू वुड सी देयर विल बी बाइंग इंटरेस्ट एंड यू कैन टेक लॉन्ग पोजीशन। बट आपका 40-50 पॉइंट के आसपास में अगर आपको मूव मिल जाता है निफ्टी में, तो आप उधर प्रॉफिट बुक कर लें, हायर प्रॉफिट की उम्मीद न करें। बट अगर मार्केट जहां पे क्लोज हुई है विद इन दैट जोन स्टार्ट होती है, तो देन ओपन रेंज कैंडल को ब्रेकआउट का रास्ता देखें। जब ओपन रेंज कैंडल ब्रेकआउट हो जाएगी, तब उसके बाद में आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। यू कैन ऐड टू योर लॉन्ग पोजीशन ओनली वंस द मार्केट इज अबाउट 13,775 डिसाइसिवली। व्हेन आई से डिसाइसिवली, आई एम टॉकिंग अबाउट 20-25 मिनट के ऊपर वहां पे मार्केट स्टैंड करनी चाहिए विद अ बुलिश बायस। राइजिंग वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, कोई भी ट्रेड लेने से पहले, राइट। एंड शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी अगर आप स्विंग में देख रहे हो, तो 13,600 के नीचे ही शॉर्ट की स्ट्रेटजी सर्च करें, उसके नीचे उसके ऊपर मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश ना करें स्विंग के लिए, राइट। ऑप्शन चेन जो हमने देखी थी उसका पीसीआर था फ्रेंड्स 0.97 के आसपास में, विच इज अ न्यूट्रल बायस फॉर निफ्टी। एंड अगर हम प्रोविजनल डेटा की बात करें, तो प्रोविजनल डेटा दिखाता है कि भाई FIIs वर नेट बायर्स ऑन फ्राइडे, 2,721 करोड़ की बाइंग की। DIIs वर नेट सेलर्स विद 2,425 करोड़ इन कैश इक्विटी मार्केट, राइट। अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से बात करूं, तो FIIs आर साइडवेज, सो आर प्रोज, बट रिटेलर्स आर माइल्डली बुलिश। एंड मैं अगर इंडेक्स फ्यूचर के हिसाब से बात करूं, तो FIIs आर नेट लॉन्ग इन इंडेक्स फ्यूचर, pros are neutral, retailers and DIs at this point of time are short in the future of Nifty and Bank Nifty both. US market and European market both are giving positive sign, so that's what may drive the market in coming times. अगर मैं RSI की बात करूं, तो 81 है, which is of course in overbought zone, but at the same time it is in bullish mode. India VIX अभी फ्लैट रहा है फ्रेंड्स, 2.79% कम हुआ है, 18.62 है, which is good for the market, but market is in overbought zone, having stochastics at 95 on daily and 97 on
वीकली बेसिस. सो ऐसे में एक कंसोलिडेशन एंड करेक्शन बनता है, राइट? सो दैट शुड नॉट सरप्राइज यू. एंड नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए 13,650 टू 13,900 की रेंज में हमको निफ्टी दिखाई देगी ट्रेड होते हुए, और वीक के लिए 13,400 से 14,200 की रेंज हमको निफ्टी की दिखाई देती है, राइट? And for intraday traders, it is important watch out the option chain data for fresh inputs on bulls and bears emotions, as well as look at India VIX as well as USD INR chart. That will help you to gauge the sentiments of the market. If you are trading, do use stop losses, and if you are in profit, keep on trailing your profits with a trailing stop loss so that you can lock your profits and keep on booking part profits. Thank you very much for watching the video. I'm sure with these videos, you are becoming professional traders and you are getting a clear picture of the market before you enter the market. To get latest information or notification, do subscribe to our channel and press the bell icon such that you get intimation on immediately once we upload the video. Be generous to share the videos with your friends and trading communities who can also be equally benefited from these knowledge videos. Thank you once again for watching and liking the video, friends. Signing off until the next video. Good luck, happy trading, happy investing.